करता हूं दिल्ली के लोगों को पसंद हूं, इसीलिए 3 बार 4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूंगा, तभी 4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी है आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं। आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया, अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए, आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की, जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's big attack on the Bharatiya Janata Party. He said the BJP government had stabbed the people of Delhi in the back. In 2014, Prime Minister Narendra Modi, then aspiring to be Prime Minister of India, had promised Delhi full statehood. On the other hand, full statehood was not given. Delhi's powers have been taken away. I quickly want to cut across to India Today's National Affairs editor Rahul Srivastav joining us for more on this. Rahul, we heard what Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said, but before that, look at how the numbers are stacked up. 131 in favor, 102 against. What does this say about the opposition alliance, India taking on the NDA? That the idea of united opposition to take on the BJP in future is getting tested. One test today, and in another 2-3 days there's going to be another test as the no confidence motion going to get taken up in the Lok Sabha. Now, if you see the numbers, till evening, the numbers which we were likely to, the government was likely to get was 125 odd. But by getting 130, more than 130 votes,
and the opposition number slipping below 110, the indication is that the some votes that the Aam Aadmi Party was counting on will come to its kitty have actually gone to, that is for the for the bill. Now, eventually, what it indicates that there is still a lot as the opposition ranks are concerned, Gaurav. Now, in that, if Arvind Kejriwal had tried to make it a federal issue, that the fires which have reached Delhi today will reach other states also, perhaps that has not been very convincing. And it seems other parties realize that Delhi is different from other states. And if you see Mr. Another Amit, point that was raised by the Union Home Minister of the was when he told Mallikarjun Kharge, the Aam Aadmi Party is not targeting me, the Aam Aadmi Party is actually targeting you. The Congress, their entire politics is about being anti-Congress, whether in Delhi or in Punjab. Is this just to create more fissures in the opposition rank, or is there merit that there are major fissures in the opposition rank, and even a bill like the Delhi Services Bill did not paper over those differences? No, Rahul, can you hear me? your audio is bad, but I gather that you're asking me that are there very serious fissures in the Yes, go on, sir. partially, but I think you're asking me that these fissures about the fissures. Yes, Amit Shah used his reply to the bill as far as the debate is concerned. Try to use it effectively to drive that wedge. One, he said that all the rules which have largely come about, the Congress had created them. And now the Congress is siding with Arvind Kejriwal, who was still now attacking the Congress party. In fact, there was a very interesting comment quipped by the Home Minister when he said that a few tons of abuses were hurled at the Congress party and various opposition leaders were called names. And then he stated also, warned Mallikarjun Kharge that just let the bill pass and Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party will be out attacking the Congress, because he knows that in Rajya Pradesh, the Aam Aadmi Party is trying to make forays. So the idea behind the whole debate eventually materialized an attempt of test of strength as far as the two formations are concerned now, the NDA versus India. And it seems that India as a whole entity within their own interpersonals between them, the relations between them, and the relationship between the opposition groupings, India and the rest, they need a sincere amount of work. Why I say that, Gaurav, Yes. that the Delhi Ordinance Bill, and in sometime in the winter session, the government is planning to bring something as critical, is likely to bring something as critical as a uniform civil code. And if there is opposition disunity in this intervening period till the next elections, it will be very difficult for the opposition to sell a unity story to challenge the NDA. But Rahul, how will the opposition be able to sell that unity story when the opposition is taking on each other in multiple states? They're only united in targeting the Narendra Modi government or the BJP. Otherwise, in states, they're fighting. So how will they be able to sell the story? The Home Minister also referred to it, whether he was talking about the Trinamool Congress, the left, the Congress in Bengal, or the Aam Aadmi Party and the Congress in Delhi and in Punjab. What happens next in a state like Rajasthan, for example? Yes, that's two meeting the opposition, which eventually led to the formation of India with 26 led by the Congress, has given one very clear impression that there are some troubled states where unity will be difficult and components of India will be contesting against each other. But beyond that, the idea is not really seat sharing or having a united face, prime ministerial candidate or any other. These are ticklish issues which can create division. And that is why this coalition is not getting into it. And the whole idea now of this India is to create a large nationwide footprint
of perception against Narendra Modi and the BJP. Beyond that, this coalition is not of a great significance in terms that if you think it is a classic coalitions in which there will be seat sharing of a leader who will be leading all of them. I think those are difficult issues. They know that these are issues which will divide the coalition. So for a unity index, high unity index, the idea is to restrict India only till as far as creating a nationwide footprint of narrative against Narendra Modi is concerned. Okay. Now, as far as that narrative is concerned, Rahul, before I let you go, as far as that narrative is concerned, on Manipur, will the opposition be able to do that in Parliament, especially at a time when the Union Home Minister said, fine, you want debate and numbers, we can do it today in the Delhi Ordinance Bill, we can do it on Manipur on the 11th. That was the challenge to Mallikarjun Kharge. So after the no confidence movement motion, do we actually see a debate on Manipur on Friday, Rahul? Yes, the government has been open to the idea of a debate. But I think eventually the idea of a debate is not the core of the whole disruption or the opposition move. It wants the Prime Minister to speak up, because once the Prime Minister speak up, they feel that they will have tangibly something against the Prime Minister to paint him as somebody who has failed. The idea is not to make the government come out with answers, because if they had, then Amit Shah would have been the most appropriate and suitable person to be replying a debate on the Manipur issue, because remember, the Home Ministry is the nodal agency between the center and the states. The idea is to make the Prime Minister speak and then build a narrative from there. And that is why, Gaurav, I'll tell the viewers a very interesting thing. This is the 28th no confidence motion in the history of this country. The first one was largely targeted at Jawaharlal Nehru government and its failure on China in 1963. But still, it was not targeted at a Prime Minister making him to speak. This no confidence motion has a unique distinction on trying to make the Prime Minister speak on an issue, and the opposition will come united to build a perception on Manipur. Interestingly, Rahul Gandhi, reinstated as a member of parliament after his supreme relief in the Supreme Court, might be leading a charge, and that might form the core of what the opposition may be doing in future. Fair enough. That happens at 12 noon. And we'll be tracking that story very, very closely. Rahul, stay with me. A quick break. Back with lots more. Keep watching our special broadcast on India Today. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV where numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Kanwal, only on India Today. और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां-कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अ अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था
और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। Our agenda was to basically see whether the state, there was legislative competence for the state to enact a law, given the fact that polygamy, and particularly for Muslims, is also governed by the Sharia Act of 1937, which is a central law. So it was keeping this in mind that the committee sat and finally submitted its report and has generally pointed out that the state has the legislative competence to do so, subject to the doctrine of repugnancy under Article 254, which means it requires the presidential assent. Would this apply only with regard to the Sharia Act, as in the repugnancy with regard to the Sharia Act, or would the polygamy ban also apply to tribal practices, etc.? In fact, in the report, we have considered that very briefly, because this was specific to the Sharia Act. We've also pointed out that the tribals have a protection under the Hindu Marriage Act of 55. So polygamy, in a sense, or marriage laws, there's been codification of it. Hindu Marriage Act was 55, the Christian Marriage Act is 1872, the Parsi Marriage Act is 1936, and the Sharia Act is 1937. So with regard to that, we've pointed it out and said that this is something also that during the legislative process could be considered. इन किराएदारों को मत दो, मीट मच्छी की दुकान जैसे तिगरा में घुसे हम। भाई ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनका पैसा हमारा पैसा इनके पास जाता है, इनसे हमले। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से, जो यहाँ गुड़गांव के कोई भी आए हो, जैसे मैं कातीपुर से आया हूँ, भाई मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है, भाई वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे। बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर कोड़ियां चलाते हैं। Quality today. In Delhi, 97. In Mumbai, 72. In Kolkata, 65. In Bangalore, 33. In Chennai, 117. In Hyderabad, 78. Watching India Today. The chilling new audio tape that exposes the planned attack on devotees at the Sringar Shiv temple, some 45 kilometers from Nu. An audio tape where the speaker is allegedly heard
taunting residents of the locality of being timid despite being numerically stronger, and then is alleged to have said that there are only about 100 to 120 devotees at the temple. At least 10 to 20 must be neutralized. Police are investigating the source of the audio tape. They're trying to find out who all shared it and its role in the violence. We bring you much more. Arvind Kejriwal with this India Today exclusive. Explosive revelations on no riots. India Today has accessed a 2-minute, 50-second audio clip that allegedly shows the violence was planned in advance and the plot was to kill at least 100 to 200 people. अरे भाई तुमने बताओ ये मेवात कहा इतने एक बुजदिलन किए के कम से 100-200 आगे होंगे कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से कम से कम जैसे गाड़ी जलाई गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट ठीक है गुजारिश है ये आपसे आज मौका है देखो हाथ अड़ाओगे तो भी इतनी गाड़ भीड़ आएगी अगर जान से भी मार दोगे 10-20 तो भी उतनी आएगी या मत सोचिए ना से हाँ तो यानी आज मौका है अपने आप है पेश कर लो ठीक है मरनो तो एक दिन जब भी आज भी मरनो और कल भी मरनो Sensational WhatsApp chats allegedly reveal how people were exhorted to take up arms on the basis of religion. भाई जितने भी या ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे 10 हैं 20 हैं 50 हैं 150 हैं जितनों भी हैं इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हैं ना चाहे 1000 ग्रुप हैं उन 1000 में बांट दीजिए चाहे सऊदी अरब तक ग्रुप हैं समन में बांट दीजिए ठीक है देखो आज तो तुम मोहब्बत कर लो काई सु कर लो चाहे बीवी सु कर लो बच्चे सु कर लो दौलत सु कर लो धन सु कर लो किसान सु कर लो एक ना एक दिन ही तो सारी छूटेगी या तो खुद छोड़ दे जो चीज़ से मोहब्बत कर रहे हो या खुद तुम छोड़ दो या मौत आने से छूट जाए या वो चीज़ वैसे बर्बाद होने से छूट जाए या मत सोचियो कि मेरी मेहरबानी रह रही है मेरे बालक रह रहे हैं या मेरी दौलत रह रही है या मत सोचियो ठीक है जब मैं अपनी कौम पे बात बने तो बिल्कुल निडर होकर खड़े हुए सामने ठीक है मैदान में भागनो पसे पुष्ट भागनो ये बुजदिलन को काम है देख रहे हैं ना वो लेडीज ले जा रहे हैं देखो The chats indicate preparations were allegedly made to attack the entire route of the VHP Shobha Yatra. दुनिया चल रही है आप वीडियो बनाने में लगे अरे खुदा के बंदो तुम नु बताओ वीडियो बना ली गए कौन कम से कम याद छोड़ दो अपनी कौम में बचाओ Earlier, Haryana Home Minister Anil Vij had claimed that the entire violence was a big conspiracy. जिस ढंग से ये इसके ऊपर हमला हुआ है और जिस प्रकार से एकदम वायलेंस अरप्ट हुई है वो कोई एकदम हुआ हादसा लग नहीं रहा है हालांकि अभी हमें जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए हम उसकी जांच करेंगे पर अपेरेंटली हमें लगता है कि किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड जरूर किया है The audio clips have exposed how the riots were meticulously planned. The police now have the task of nailing the conspirators behind the Mewat mayhem. With Arvind Kejriwal from Delhi, Bureau Report, India Today. We will continue to track this story very closely. That is all we have time for on this bulletin. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us. You are watching India Today. Fact of the matter is there is a MOU signed by the Congress party which remains a mystery till date. And then there is this New York Times report about a certain portal and how money was transferred for propaganda for Chinese. And they have been also been part of the ecosystem.
supporting the Congress party. So all this needs an explanation when I would call it an enemy country like China is using our media to expand its base in India. We have sensitive borders with them. Many of the Manipur issues which we said has gone into the background. No, it's not gone into the background. It is a lot of weapons coming in from China via Burma, which is a soft border. Now, these are issues that need explanation. And if the Congress party doesn't give a reply to this, then, we will take this to the logical end through discussions in Parliament to the streets of the country and raise issues. Because what is a political party doing meddling around with funds coming in from China? जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और इतने लोग हैं उनको सलाखों पर पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को किया जाए। कांग्रेस पार्टी सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहां तक मैं बोलना चाहता हूं, ये तो क्या है, उस कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीस को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए किया है। Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 26 degrees. Kolkata, maximum 29 and minimum 25 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 35 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 29 and minimum 22 degrees. Vasant Valley School secured the top honours in the 13th edition of the Vasant Valley Aaj Tak Hindi debate competition, showcasing their debating prowess and intellectual acumen against formidable opponents there. They showcased a brilliant display of debating skills from top schools across the nation. Take a look. तो हम लोग बस चुप्पी से इन लोगों को देखते रहते हैं, ना सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और ना नकारात्मकता को खत्म करते हैं। पर मूकदर्शिता का अर्थ जो हमारा दल बताना चाह रहा है वह यह है, A fierce clash of intellect. स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम आज के सदन को भारतीय बुद्धिजीवियों के सदन द्वारा देखना चाहेंगे। हमें प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की आवश्यकता है और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हमें अपने कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जादूगर बन सकती हूँ, वो जो ट्रॉफी है उसको 2 में भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वसंत वैली एंड सिंधिया स्कूल दोनों ही जीते। मुझे इतना मज़ा हिंदी वाद विवाद में कभी नहीं आया जितना इस वक्त आया। इसके लिए बहुत बहुत तालियां। एंड द विनर इज वसंत वैली स्कूल।
And the prestigious Vasant Valley School emerged victorious in the 13th edition of the Vasant Valley Aaj Tak Hindi debate competition. कितना बढ़िया है वह समाज जहां हर घिनौने कार्य का जवाब है मूकदर्शिता. Students from the Vasant Valley and the Scindia School took on each other in the final round of the competition, which saw a thrilling face-off between the teams of both the schools. उस पे टांग अड़ाकर उसके बिना ज्ञान हुए उसे और बिगाड़ने की कोशिश करता है, वह होता है मूकदर्शिता. Participants from the two teams sparred on the motion adopted by the House, Mookdarshita mein hi buddhimani, which translates into being a mute spectator is a smart decision. The competition saw an enthusiastic participation from 26 renowned schools from all corners of the country. While students representing the Scindia School debated for the motion, तो जिस आदर्शवाद की भावना से, जिस मूक दर्शक का चयन ना करने से हमारे ऊपर संकट आ रहा है, हमारे परिवार पर संकट आ रहा है, हम उसका चयन क्यों करें महोदय? महोदय, आज बुद्धिमान वही है जो स्वयं का जीवन संचालन करने में सक्षम हो, जो स्वयं की परिस्थिति को सुधार सके, स्वयं सफलता हासिल कर सके. वह बुद्धिमान नहीं है जो दूसरों की मदद करने का चोला पहन के घूम सके. बुद्धिमानी धर्म से कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खाती है महोदय, जिस बात को समझने में मेरे विपक्षी मित्र पूर्ण रूप से असक्षम है. the students representing the Vasant Valley debated against the motion. उनके खंडन की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आके सबसे पहले मूकदर्शिता की गलत परिभाषा दी, उसको हमारे पहले वक्ता ने सही किया. उन्होंने आके बोला कि हमें अपनी जंग लड़नी जरूरी है. लेकिन महोदय, आप ही बताइए, अगर मेरे पास इस बात का हक ही ना हो कि मैं अपनी आवाज उठाऊं, अपने विचारों को प्रस्तुत करूं, तो मैं कौन सी जंग लड़ूंगी महोदय? उन्होंने आके बात करी निजी विकास की, आगे बढ़ने की, कि हमें खुद आगे बढ़ने की जरूरत है, खुद आगे होने की जरूरत है महोदय. लेकिन आप ही बताइए कि हम लोग जब अपने विचार ही आगे नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? In the end, Vasant Valley School's compelling arguments and persuasive delivery earned them the coveted title. Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 26 degrees. Kolkata, maximum 29 and minimum 25 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 35 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 29 and minimum 22 degrees. सॉरी. नमस्ते टमाटर प्रेमियों, 104.8 इश्क एफएम पर आपको चखाना चाहता हूँ आजकल का टमाटरी गीत. ये हो ग्रेवी, बिरयानी, हो चटनी, पाव भाजी, सदमे में अम्मी और अब्बा, 1 किलो टमाटर 200 का था बिल, बजट हिला मेरा रब्बा. टमाटर कैसे लोगे, 200 के किलो हो गए टमाटर. टमाटर कैसे लोगे, 200 के किलो हो गए टमाटर. किलो में ना निकले एक भी ढंग का, मम्मी का दिमाग था सन का. टमाटर जो ना मैं छांट के लाया, मम्मी लगा देगी लंका. टमाटर वाला एक नहीं आ रहा, ऑनलाइन भी चेक कर चुका मैं. मोहल्ले की सारी रेडी पूछ पूछ के मर चुका मैं. नहीं जरूरत बर्गर में टमाटर की, सलाद बन रही खीरा प्याज और गाजर की. एक टमाटर से पूरा दिन तुम चलाओ, 1 हो गई सिस्टर और अम्मा. टमाटर कैसे लोगे, 200 के किलो हो गए टमाटर. You are watching India Today. Hello, you're watching India Today and I am Ishwarya Paliwal. Let's start the show with the headlines.
The contentious Delhi Services Bill that will give almost complete power to the centre to decide on all transfer postings has been passed in the Rajya Sabha. Home Minister Amit Shah is accusing the Aam Aadmi Party of indulging in fraud. Arvind Kejriwal has hit back and said that the BJP wants to stop the work done by the Aam Aadmi Party. Stage is set for the first India versus NDA clash on the floor of the Parliament. The debate on the no-confidence motion brought by the opposition against Prime Minister Narendra Modi will begin from tomorrow. Smriti Irani, Nirmala Sitharaman to lead BJP's charge. Rahul Gandhi's Lok Sabha membership restored after Lok Sabha Secretariat issued a notice. Grand welcome by India MPs for Rahul Gandhi in the Parliament. BJP claims China linked to Congress after New York Times report says the portal NewsClick was pushing Beijing's agenda. NewsClick calls China funding allegations as misleading. Corruption charges on Siddaramaiah Sarkar. Karnataka governor raises graft charges against the state agriculture minister. The minister says these allegations are baseless. Now, the Delhi Services Bill has been passed in the Rajya Sabha. Now, out of the 238 votes, the bill got the support of 131 members, while 102 members opposed this bill. Union Home Minister Amit Shah, who was replying to the queries and the objections raised against the bill, also launched an attack against the Delhi government. Amit Shah claimed that no other Chief Minister of Delhi ever fought with the centre. He also said that it is the Aam Aadmi Party which was actually born after opposing and abusing the Congress party. It's the same party that is now seeking the support of the Congress party. Immediately after the bill was passed in the upper house, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that this bill was brought in as the BJP knows that it cannot defeat the Aam Aadmi Party in elections. Arvind Kejriwal also claims that the bill violates the Supreme Court's verdict. He said that the Prime Minister does not respect the people's mandate. एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर हम आए। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर आपको मिर्ची लगी होगी, बैठ जाओ। आपको तकलीफ हुई है, अरे गोदी में बैठने में तकलीफ हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा।
गोदी में बैठ गए। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया। 30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जनता के लिए काम हो सकता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का अधिकार छीना है, दिल्ली की जनता के वोट का अधिकार छीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग हर इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और इसीलिए आज इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली की सरकार के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली के करोड़ों लोगों की वोट के अधिकार को छीना है। The stage is now set for a fiery no trust motion that will take place in the parliament on Tuesday. After Rahul Gandhi's comeback in the parliament after 4.5 months, the Modi government is all set to face its second no confidence motion. The motion was moved by Gaurav Gogoi of the Congress party on the 26th of July over Prime Minister Narendra Modi's statement on the current situation in the state of Manipur. With 3 days allocated for the discussion, Prime Minister will reply to the motion on the 10th of August. Rahul Gandhi gets a hero's welcome as he returns to Parliament after a break of more than 3 months. The period when he was disqualified following conviction in a defamation case. MPs and leaders belonging to the opposition alliance, India, turned up in large numbers to greet the Wayanad MP as he reached Parliament on Monday.
The Lok Sabha Speaker's decision to restore the Congress leader's membership comes a day before the opposition's no confidence motion is taken up in the House. Rahul Gandhi is expected to speak on the motion. This will strengthen our ranks, particularly that the no confidence motion is coming up tomorrow. This will bolster our arguments on why this government has lost the confidence of India. भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी. राहुल गांधी इज बैक और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी. The BJP has drawn the battle lines ahead of the no trust vote. The Narendra Modi government on Monday quoted a New York Times report and alleged that online news portal NewsClick is funded by firms linked to Neville Roy Singham, a US billionaire based in Shanghai. The government, citing the news report, said that Singham funds news organizations across the world to spread Chinese propaganda. The BJP dragged in the Congress, questioning why the Grand Old Party backed NewsClick when it was raided by the ED in 2021. क्या आप देश को राहुल गांधी जी जवाब दोगे कि ये 2005-7 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया वो कहां-कहां खर्च हुआ? जो हाई लेवल आपने मीटिंगें करनी थी वो क्या चाइना के साथ हुई? क्या न्यूज़ क्लिक एक उसका हिस्सा है? क्या कांग्रेस चीन न्यूज़ क्लिक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं? The Modi government also tried to draw a link between the Congress and the Chinese Communist Party. Congress, China, NewsClick are part of a umbilical cord. और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है. When Parliament takes up the opposition's no confidence motion on Tuesday, it will be a preview to the big fight of 2024. This is the first time the opposition alliance, India and the NDA led by Prime Minister Modi are coming face to face on the battlefront. And all indications are the bout will be no holds barred. Bureau Report, India Today. The Bharatiya Janata Party and the Congress Party are at loggerheads over an investigation done by the New York Times. Now, in a report in New York Times, it is prompted that the BJP is now accusing the Congress of having links with China. The New York Times investigation is on a report on how Chinese government has been actively peddling propaganda across the world, including India. Now, this has actually echoed both inside as well as outside the parliament. The BJP is now demanding answers from the Congress party. It's levelling serious allegations against the Gandhis of having links to Beijing once again. The BJP raked up the funding of Rajiv Gandhi Foundation once again, demanding a detailed investigation. It's accusing the Gandhis of attempting to shield news website NewsClick when they were raided for an alleged China link way back in 2021. It is perhaps the biggest media scandal to rock India and the world in recent times. A New York Times investigation has blown the lid off Chinese propaganda being passed off as independent content, courtesy million-dollar deals. And yes, there's an alleged Indian puppet as well. Indian news website NewsClick, the same company that was raided in 2021, has been named by the New York Times investigation report as having received 38 crore rupees to run Chinese puff pieces. The NewsClick site put up videos and articles like China's history continues to inspire the working class, all because of an alleged shady deal with the Chinese Xi Jinping government. And the man who made these payments to NewsClick allegedly and many other international media platforms is reportedly Neville Roy Singham, a US tech billionaire based in Shanghai. Singham, according to the report, acted as a front for the Chinese government and paid several networks to run China-positive pieces, including Indian news site NewsClick. The rot runs deep, as Enforcement Directorate sources back in 2021 had revealed how the money had been sent to NewsClick's shareholder, Gautam Navlakha. If we go by the allegations,
Basically, Communist Party of China. The person who was involved in this entire deal is Newell Roy Singham. He has 4 non-profits in USA, and he is a tech billionaire living in Shanghai. Through Singham, 38 crore rupees traveled to NewsClick. Out of these 38 crore rupees, this becomes extremely important. Out of 38 crore rupees, 9 crore came through foreign direct investment via inward remittances. Apart from 9 crore rupees, almost 28 crore rupees also traveled, and according to NewsClick, it was in exchange of some of the services which they provided. But when Enforcement Directorate raided their premises, when they got hold of certain documents in this entire investigation, what they got to know, there was no logical explanation of that 38 crore rupees. Out of 38 crore rupees, again, extremely important, 21 lakh rupees went to Gautam Navlakha. He is also a shareholder, and along with Gautam Navlakha, there were certain individuals, certain journalists who also got that money. This explosive investigative report has sparked off a massive political fight as the BJP has raked up the Rajiv Gandhi Trust's alleged funding from China and questioned why the Congress was quick to jump to NewsClick's defense back in 2021 during the Enforcement Directorate raids. 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को। और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-7 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। The BJP has also put the focus on how misinformation was being spread rapidly on social media to create an anti-India narrative. There is an attempt to rein in misinformation. These platforms jump along with their friends and rally behind this false cover of free speech. The right to free speech as guaranteed in our Constitution is certainly not and must not and should not be a cover for misinformation directed at our nation's rise. The Rajiv Gandhi Trust has been accused of receiving donations from Chinese entities between 2005 and 2009 under the leadership of Sonia Gandhi. As the BJP Congress political fight blazes on, the question over whether some journalists have become Ji Huzuris to Xi Jinping has sparked a massive international debate. With Munish Pandey in Delhi, Bureau Report, India Today. On the third day of the Gyanvapi survey, the court ordered survey of Gyanvapi, including the Wazu Khana, to determine if the mosque was actually built on a pre-existing temple or not. The Muslim side is now claiming the symbols on the walls are not Hindu symbols. The Hindu side, on the other side, is claiming that they found remains of Hindu idols in the Gyanvapi mosque. And the primary stage of the survey at the moment is over. The Gyanvapi Mosque gates opened once again on Monday. The survey continues on the premises for the 5th day now. The Archaeological Survey of India survey is being carried out to determine if the mosque was built on a pre-existing Hindu temple. ASI used plenty of machines. The GPR is already in actions. The area near that particular tehkhana and also near the tombs were being identified, checked, screened, mapping, and everything related to measurement work has been almost completed, and GPR technology is also into use, but we've let the survey team may take around 1 to 2 weeks for the completion of survey. Measurement का कार्य उन्होंने किया है, नाप जोख कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सारी चीजें, सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं। आज भी गुंबज में भी उनकी कार्रवाई चली है। मुस्लिम पक्ष भी आपके न्यायालय का जो आदेश है, न्यायालय के आदेश का सकारात्मक रूप से सहयोग कर रहा है, सम्मान कर रहा है। The Hindu side claims remains of idols were found in the complex, apart from a half-man, half-animal Narasimha statue. जो तहखाना है खोला गया, चाबी जिसकी है मस्जिद कमेटी की वजह से, उसको खोलने में पहले एतराज़ किया गया, फिर खोला गया। तो वहाँ आप लोग जब पिछली बार भी गए थे
क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप लोग थोड़ा सा देख के शॉक थे, ये उम्मीद नहीं थी, दिख गया? देखिए, उसमें हमारे मंदिर के सारे अवशेष थे और एक मंत्र लिखा हुआ था, त्रिशूल था, डमरू था, शंख था और ये क्या लिखा स्वस्थ नहीं दूसरे भाषा में लिखा था, मतलब देवलिपि भाषा में लिखा था हम ही लोग का, लेकिन देवलिपि भाषा में लिखा हुआ था। But in a stunning claim made by the Muslim side, their lawyer claimed the Trishul symbol found in the complex is actually Allah written on the walls of Gyanvapi. आप कहते हैं त्रिशूल लिखा, हम कहते हैं अल्लाह लिखा, हम भी तो अल्लाह उसी तरह लिखते हैं। हम भी तो अल्लाह लिखने का ये वही सिस्टम है जिस तरह से त्रिशूल बनाने की बात करते हैं। The Muslim side even admitted to the presence of Hindu symbols in the Gyanvapi, but claimed that such motifs were constructed by Mughal Emperor Aurangzeb to promote Hindu-Muslim harmony. कभी आज तक इस तरीके का कोई निशान नहीं दिखा और नहीं दिखता। मैं सवाल करता हूं कि अगर फर्ज कर लीजिए कि किसी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई भी जाएगी तो उसके निशान को क्यों बाकी रखेंगे? सब तो छुपा देंगे। इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का बयान गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जबकि कोर्ट के अंदर मामला भी चल रहा है, विचाराधीन है, कैसे कोई आदमी इस तरीके का बयान दे सकता है? While digging is prohibited for the Supreme Court mandated survey, the survey team is relying on ground penetrating radars to locate any pre-existing structures. But what really is the Gyanvapi truth? We'll only know once the survey team submits its report. You can say a good news is that finally, after the verdict of Supreme Court, now the Muslim side and Intizamiya committee is supporting this particular ASI survey, which seems to be on for the next 2 weeks. But it is evident that many such proofs with relation to the temple, that there could be a temple there in the previous ages, have been found as claimed by the Hindu side. With cameraman Neeraj Kumar, Samarth Srivastava for India Today. It is time now for us to take a very quick break. More news coming up on the other side. You are watching India Today. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting, India Today reporters fearless on the ground. Stone pelting was so aggressive from the both sides. Entire market in the area has been shut right now. Attacked the cyber police station of Noor. Facts, questions, What resulted in the communal clashes? and first-hand reports. एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से छतों पे से गोली तक चली है, पीछे वाला शीशा टूट लिया। 100% accuracy amidst the blaze. We track the face of every story. India Today. India United. You are watching India Today. Now, the chilling new audio tape that exposes that it was a planned attack, an attack on the devotees at the Srinagar Shiv temple 45 kilometers away from Noor, is quite disturbing. An audio tape where the speaker taunts the residents of the locality for being timid despite their numerical strength, and then goes on to say that there are hardly 100 to 120 devotees at the temple and at least 20 must be killed. The police at the moment is investigating the source of the audio tape, trying to find out who all shared it and the role that this tape played in the violence that followed. The police are now insisting prima facie it seems that the evidence at the moment is pointing towards the fact that this violence was meticulously planned. My colleague Arvind Kejriwal with this